In this class, we will start a new chapter, chapter number 7. The name of this chapter is Classes and Object. So in last chapter, in chapter number 6, already we have studied what is class and what is object. So in this chapter, we have to study how to create a class and how to create objects. So here in this chapter, we have to study the rules for creating classes and objects. So let us start classes and objects chapter. So before that, for examination point of view, let us see for how much marks this chapter will come in the examination. So this chapter number 7 is having total 6 marks. So in examination, you will get 2 questions from this chapter. So 1 marks question, 1 question for 1 marks and 1 question for 5 marks. So total you will get 6 marks question from this chapter, and this is very easy chapter. So here you can score full 6 marks from this chapter. So let us start. So already in last chapter, you have already seen what is class and what is object. So first, what is class? So class. So in object oriented programming, we have studied the definition of class. So what is class means? Class is a collection of similar items, or class is a collection of similar data items. Means in simple words, class is a group of same items. Class is a group of same items. Same items means, for example, okay, I will give one example. Fruits. So fruits is a name of class. Consider fruits. Fruits is a name of class. Then what are the items in fruits class? So we can group all fruits into a single group as a fruit class. So different in this class, the different items are apple, banana, orange, grapes, like this. So group of all fruits becomes one class because all are same type, means all are fruits. So in this group we cannot add tomato or potato, these are vegetables. So similar items, same items can be grouped into a single unit, that is called as class. So class is a group of same items. So this is simple word definition, but you have to write the definition given in book. So in book the definition is class is a collection. Collection means same as group. So class is a collection of similar data items. Okay, then see here you can see this point, CLASS class. So this is also known as keyword, because in C++ language CLASS in small letter means it is a keyword. Keyword means this is also called as reserve word. Keyword or reserve word means already computer know the meaning of such words. These words are called as keyword. So class meaning is already known to computer. So what is there inside class? Class के अंदर क्या रहता है? So a class combines data elements and functions. Means in class data elements and functions are written. So class means it is a group or combination of data items and functions. So we will see here. Okay, before that, here some terminologies are given used in procedural programming language and object oriented programming language. Okay, procedural programming language means procedural programming language is a old type of programming language, and object oriented programming language is a new method or technique of programming. So already you know what is variable. In first year we have studied variable. So in procedural programming language, we use many times words like variable. So what is variable? So variable definition is, variable is a quantity which can be changed. So in old programming technique,
we call variable. And in new technique, object oriented programming technique, same variables are called as objects. So in old method or old technique, variables are used, and same variables are called in new method as object. In old programming technique, user defined data type is called in new technique as classes. Like same structure members in old are called as instance variables in new technique. And in old means procedural programming, there are functions, and these functions are called as methods in object oriented programming. So methods means same as function only. And we use word like function call, so this is also called as message passing in new technique. Okay, here how to identify means कैसे चेक करना है, मीन्स वेरिएबल कैसे होता है, फंक्शन कैसे होता है. So already in first year we have studied. Now I will briefly revise this. Okay, so in programming, variable means variable is a quantity, any name where we can store value. For example, this is marks. Marks is a variable. So mark is a variable where we can store any student marks, like marks is equal to 50. So 50 is a value we are storing in marks variable. So marks, okay, how variable looks means variable कैसे दिखाई देता है means variable is means just like words. So marks, so this is a variable. Okay, now same marks. ओके, अभी मैं मार्क्स के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा. नाउ इट विल बिकम array. So already you know what is array. Okay, then same, this is marks. इसको मैं parenthesis ब्रैकेट्स लगाऊंगा, parenthesis, then it will become function. So this is the difference, means just only a word. Variable means a simple word, marks. So this is a variable. Then array means if same word को हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया. So if we use square brackets with any word, then it will become array. And if same variable, if we use with any word, if we use parenthesis brackets with any word, then that will become function. So program में कैसे चेक करना है? So without any bracket, any word will be like variable. If any word is used with square bracket, then that is a array. And any word if used with parenthesis, then that will be function. So function को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? So function means कंपल्सरी पैरेंथेसिस यूज होता है. अरेज मीन्स वर्ड के साथ कंपल्सरी स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है. So वेरिएबल, अरे एंड फंक्शन. So here how we can identify. So function means अभी object oriented programming language में function means method. Function is also called as methods. Okay, now let us see. Okay, one more thing, the data elements in a class are called as data member or member data. Means any variable inside a class is called as data member or member data, and functions in a class are called as member functions or methods. Okay, we will see in next topic. Okay, so next topic is definition and declaration of classes and objects. So this is very important topic, because in examination for 5 marks this question comes, like what is class,
explain the definition and declaration of class. Or what is class, explain with general syntax. So all means same. So you have to write the general syntax. First you have to write the definition of class, and then you have to write the general syntax. General syntax means rules for creating class. Then you have to explain. It is very easy. Now we will see. So first definition. Okay, here definition means a class definition is a process of naming a class and data variables and functions of a class. Means okay, class definition means उसका वो definition वाला part अलग हो गया है. क्लास डेफिनेशन मीन्स क्रिएटिंग क्लास, क्रिएट करने को भी क्लास डेफिनेशन बोलते हैं. सो क्रिएटिंग ए क्लास इज कॉल्ड एज क्लास डेफिनेशन. सो क्लास डेफिनेशन में क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस. प्रोसेस मीन्स हियर वी हैव टू क्रिएट क्लास बाय राइटिंग क्लास नेम, देन वेरिएबल्स एंड मेथड्स. थ्री थिंग्स वी हैव टू डू इन क्लास डेफिनेशन. ओके, ये तो प्रोसेस, क्रिएशन प्रोसेस हो गया है. एक्चुअली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लास? Class means it is a collection of similar data items or identical data items like this. Okay, here one important point is there. For 1 marks in examination, question will come. So question will come like, what is data member or what is member data? So for 1 marks you have to write answer. What is data member or what is member data means the data variable in a class is known as member data or data member. Okay, then here how to create a class. The general syntax means rules. The general syntax for creating a class is, सो क्लास क्रिएट करने के लिए देर आर सम रूल्स. सो वो रूल्स को फॉलो करके क्लास क्रिएट करना पड़ता है. सो हियर क्लास. सो फर्स्ट फॉर क्रिएटिंग क्लास वी हैव टू राइट CLASS स्मॉल लेटर्स क्लास. सो दिस इज ए कीवर्ड. देन वी हैव टू राइट यूजर नेम, यूजर डिफाइंड नेम. सो यूजर डिफाइंड नेम मीन्स एनी नेम. Depending upon your choice, you can give any name here, X, Y, Z, whatever. Then open flower bracket. Then we have to use here we have to use private member data. So here we have to use private, protected and public. Okay, I will show you by creating. मैं अभी एक पेपर पे इसको सिस्टमेटिकली राइट करके बताता हूं मैं. सो दिस इज जनरल सिंटैक्स, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक. सो दीज आर कॉल्ड एज एक्सेस स्पेसिफायर्स. एक्सेस स्पेसिफायर्स मीन्स दे आर लाइक सिक्योरिटी गार्ड्स. ये सिक्योरिटी गार्ड के जैसे वर्क करता है. सो दिस प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक आर सिक्योरिटी गार्ड्स. दे प्रोटेक्ट द डेटा एंड फंक्शंस. सो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक. So in these are access specifier. So after private we can write member data and member functions, and same after protected we can also write member data and member functions, and after public we can write member data and member functions. Then after that close the flower bracket and put semicolon. So in this way you have to write the general syntax for creating a class. Okay, ये जनरल सिंटैक्स इतना ऐसे ड्रॉ करके लिखकर तुमको एक्सप्लेन करना है. सो फर्स्ट लाइक दिस. सो व्हाट इज क्लास? CLASS वर्ड. सो दिस इज ए क्लास इज ए कीवर्ड. इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर ए क्लास. एंड व्हाट इज यूजर डिफाइंड नेम? सो यूजर डिफाइंड नेम इज द नेम गिवन बाय यूजर, एनी नेम. Then class body enclosed in a pair of flower brackets means class का body ये starting flower bracket and closing flower bracket. So इसका between में class का body होता है. And what is there inside body means body में क्या रहता है? So class body contains declaration of members, variables and functions.
So members are specified using access specifiers. Okay, so I will show. Okay, better मैं तुमको इधर टाइप करके बताता हूँ मैं. So in exam, so this is very important topic and it is very easy. So in examination you will get a 5 marks question like, okay, question कैसे होता है. So question 5 marks के लिए होता है like what is class, explain with general syntax. So एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्लास, एक्सप्लेन विथ जनरल सिंटैक्स. सो व्हाट इज क्लास, एक्सप्लेन विथ जनरल सिंटैक्स ऐसे भी होता है और कुछ अलग वर्ड से भी आ सकता है लाइक व्हाट इज क्लास, एक्सप्लेन क्लास डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन मीन्स दोनों बोथ मीन्स सेम होता है. ओके अभी एग्जाम में उसका आंसर कैसे लिखते हो. फर्स्ट व्हाट इज क्लास. सो क्लास इज ए कलेक्शन of similar same type of data. Class is a group of same type of data. So मैं इधर बुक में कैसे दिया है वैसे लिख रहा हूँ. Class is a collection of similar data items. Okay, ये तो definition हो गया है. Next part, we have to explain general syntax of class. So what is general syntax? So we have to write like this. The general syntax of class is as follows. मीन्स क्लास कैसे क्रिएट करते हैं उसका सिंटैक्स लिखना है हमको. सो दिस वाज क्वेश्चन एंड दिस इज आंसर. सो जनरल सिंटैक्स. सो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं. सो इट इज वेरी इजी. फर्स्ट वी हैव टू राइट क्लास स्मॉल लेटर्स, देन सो ये कैपिटल हो गया है, वी हैव टू राइट इन स्मॉल लेटर्स. So class, then user defined name. So here we can write anything. Then after that class body starts with opening flower bracket. Okay, then after opening flower bracket private. Okay, private, protected, these are the security guards. So they are called as access specifiers. So access specifier means they are keyword, they work like security guard. वो डाटा वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देते हैं. सो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक. सो हाउ टू क्रिएट ए क्लास. So this is the method for creating class. So we have to start like this. First class, then user defined name, class user defined name, then opening flower bracket, then private keyword. So after private, here we have to write private data members and member functions. Okay, then same in protected section also. Protected section में भी same आएगा, data members and data members and member functions. देन पब्लिक सेक्शन में भी सेम आएगा, डेटा मेंबर्स एंड डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. ओके, देन लास्ट क्लोज द फ्लावर ब्रैकेट, पुट सेमीकोलन. सो दिस इज वेरी सिंपल. So the general syntax for creating class is first class, then user defined name, then open flower bracket, then private, protected and public.
So after private, we have to write data members and member functions, and in protected also data members and member functions, and in public also data members and member functions. So in last, close the flower bracket and put semicolon. So this is the syntax for creating class. ओके ये तो सिंटैक्स हो गया. अभी हमको एक्सप्लेन करना है इसमें क्या क्या पार्ट हमने यूज किया है. सो व्हाट, फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस क्लास वर्ड. सो व्हाट इज क्लास? क्लास इज ए कीवर्ड. It is used for declaring class. Then what is user defined name? So user defined name is a any name given by user. User select करता है, कुछ भी name दे सकते हो, x y z anything. So user defined name is the name given by user. Then after this the class body is covered inside opening flower bracket and closing flower bracket, and inside these brackets there is a class body. So inside class body, what is there? There are access specifiers like private, protected and public, and in each access specifier there are data members and member functions. So in private also data members, member functions are there, in protected also and in public also. So what is data member? So data member is nothing but variable inside a class. अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा. So and what is member functions? So member functions are nothing but functions declared inside a class. So इतना ये लिखने के बाद तुमको इतना एक्सप्लेन करना है उसको और उसका एक एग्जाम्पल देना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बताऊंगा इधर. So here this is general syntax of class. Like class, user defined name, open bracket, closing bracket with semicolon, then private, then protected and then public. So private, protected and public, they are called as access specifier. They protect the member data and member functions. So ये security guards के जैसा work करता है. So it will protect the data and functions in class. Okay, ये तो general syntax हो गया. Now right side is class example is there. So class is a keyword. Then here user defined word. So user defined name, you can write any name, student, book, notebook, pen, pencil, whatever name you can write. So class, student, then open flower bracket, then same, private, protected and public. So in private, protected, public, we have written here data members like integer name, integer age, integer father. So these are the variables, they are called as data members. Integer marks. So integer marks. So integer marks is also a data member. Okay, data member and member functions दोनों में difference कैसे कर सकते हो? So कैसे आइडेंटिफाई करोगे which is data member and which is member function? Okay, so data member means like this. So data member is nothing but variable, and member function means a function declared inside class. फंक्शन है बोलकर कैसे चेक करोगे? सो फंक्शन मीन्स ऑलवेज उसके वर्ड के आगे ऐसे ब्रैकेट्स होता है लाइक दिस पैरेंथेसिस. सो दे आर कॉल्ड एज मेंबर फंक्शंस. ऐसे पैरेंथेसिस यूज नहीं होता है तो उसको बोलते हैं जस्ट डेटा मेंबर्स. एंड इफ वेरिएबल यूज्ड विथ पैरेंथेसिस देन दैट विल बिकम ए फंक्शन और मेंबर फंक्शन. देन क्लोज द ब्रैकेट. सो दिस इज सिंटैक्स and this is example how to create a class. Okay, इतना syntax लिखकर तुमको explain करना है. What is class? Class is a keyword. It is used to declare a class. Then what is user defined name? User defined name is any name given by user. Okay, what is access specifier? Okay, now we will see in next topic. ये private, protected, public क्या होता है इसका detail next topic में देखेंगे. So here another example is there like class account. So account बोलकर एक class create किया है हमने. Class account open flower bracket and here closing inside private public. Okay, इधर protected हमने use नहीं किया है.
सो ये कंपलसरी नहीं है. वी कैन यूज प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और वी कैन नॉट यूज डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम. सो प्राइवेट सेक्शन में हमने कितना 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है. अकाउंट नंबर, नेम, अकाउंट टाइप, बैलेंस अमाउंट, लाइक दिस. सो दीज आर द 4 वेरिएबल्स. सो ये वेरिएबल हमने क्लास में डिक्लेयर किया है. सो दीज वेरिएबल्स आर declared inside a class, hence they are called as data members. And this is a array because here square bracket is used, and here these are member functions. Why I am calling, मैं इसको member function क्यों बोल रहा हूँ, because here parenthesis is used. So if we use parenthesis then it will become function. parenthesis use करने से ये function बन जाएगा. अगर ये parenthesis नहीं रहेगा तो just इसको हम डेटा मेंबर बोल सकते हो, वेरिएबल बोल सकते हो, बट हियर पैरेंथेसिस आर यूज्ड, हेंस इट इज कॉल्ड एज मेंबर फंक्शंस. ओके, नेक्स्ट important topic is access specifiers. So what is access specifiers? So अभी just हमने देखा है. So inside a class body, private, public and protected बोलकर कुछ word use होता है. So these private, public and protected words are called as access specifiers. Okay, so here what is the use of private? So private means, private access means a member data can only be accessed by the member function. ओके, प्राइवेट यूज करने से क्या होता है, प्राइवेट सेक्शन में हम कितना जितना भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, ऑल दोज वेरिएबल्स बिकम्स प्राइवेट फॉर दैट क्लास. मीन्स वो वेरिएबल्स वो क्लास के लिए प्राइवेट बन जाएगा, उसको दूसरा क्लास का फंक्शंस इसको यूज नहीं कर सकता है. सो इफ वी यूज प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स then the variables or member functions become private for the class. If we use public if we use public access specifier, then data members and member functions will be available for other classes also. Okay, I will show here. Then protected. So protected is also access specifiers. So if we declare variable in protected section, then the data members or variables will become private for other classes and public for child classes. Okay, we will see here. Okay, उसका डिफरेंस मैं यहाँ बताऊंगा. Okay, so here there are two class. ओके, ये क्लास का नेम है ए फैमिली एंड अनदर क्लास नेम इज बी फैमिली. ओके, सो ए फैमिली में प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक 3 एक्सेस स्पेसिफायर हमने यूज किया है. सो बी फैमिली में भी सेम, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स वी हैव यूज्ड. ओके, नाउ ए फैमिली में प्राइवेट सेक्शन में मैंने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है, मेंबर A1 एंड मेंबर A2, 2 वेरिएबल्स. प्रोटेक्टेड सेक्शन में सेम 2 वेरिएबल्स A4 एंड A5, एंड इन पब्लिक सेक्शन A3, A4. ओके, इसका मीनिंग क्या हो गया, प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करने से A1, A2 वेरिएबल बिकम्स प्राइवेट बनने से क्या होता है, इफ A1, A2 बिकम्स प्राइवेट, ओके, देन बी फैमिली मीन्स बी क्लास, ये बी फैमिली वाला क्लास प्राइवेट मेंबर्स को यूज नहीं कर सकता है. सो प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करने से वो वेरिएबल दूसरे क्लास को यूज करने को नहीं मिलेगा. सो इफ वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन प्राइवेट सेक्शन, देन दे विल बिकम प्राइवेट एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड बाय अदर क्लासेस. सो अभी क्लास बी, क्लास ए का प्राइवेट मेंबर्स को यूज नहीं कर पाएगा. ओके, नेक्स्ट पब्लिक. फॉर एग्जाम्पल पब्लिक सेक्शन में A3 एंड A4, पब्लिक सेक्शन में A3 एंड A4 2 वेरिएबल्स आर देयर पब्लिक सेक्शन में. ओके, सो क्लास ए फैमिली का पब्लिक सेक्शन में A3 एंड A4 2 वेरिएबल्स आर देयर. सो दीज 2 वेरिएबल्स आर written in public section. Okay, what
इफ ओके, पब्लिक सेक्शन में लिखने से क्या होता है, these two variables becomes public. Public means anybody can use these variables. मीन्स ए फैमिली वाला भी ये वेरिएबल यूज कर सकता है एंड बी फैमिली वाला भी ये वेरिएबल को यूज कर सकता है. सो पब्लिक वेरिएबल मीन्स दे आर ready for use for anybody. Any class can use these functions. ओके, प्रोटेक्टेड में लिखने से क्या होता है, प्रोटेक्टेड में दूसरा क्लास वाला ये मेंबर्स यूज नहीं कर सकता है, बट इसी ए फैमिली का सेम चाइल्ड क्लास बोल के आता है, सब क्लास. सो सब क्लास वाले इसको यूज कर सकते हैं. ओके, वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, डिटेल देखेंगे. So like this is the difference between access specifiers. So if we declare variable inside private section, then variable becomes private. They cannot be used by other classes. If we declare variable in public, then the variable becomes public. Public means those variables can be used by anybody. Other classes can also use public variables. Protected means protected variables can be used by only subclasses, not all classes. Subclasses means child class. वो next topic में आएगा, so next topic में देखेंगे. So this is difference about means this is the explanation about these access specifiers: private, protected and public. Okay, next is members of class. So members of class किसको बोलते हैं? What are the members of class means data members and member functions are called as members of class. So in class there are two types of members, data member and member function. So here you can see data member or member data you can call, and member function. Okay, how to use this member of the class? Class का member को use कैसे करते हो? So to use the member of class we have to use with object. So class create करने के बाद हमको object create करना पड़ेगा. Then we can use the member of class by writing like object dot member name. Okay, वो next topic में आएगा. अभी हमको objects कैसे create करते हैं वो देखना है. So okay, so this is about access specifiers. And next topic is member functions. So what is member functions? So member function means, what is member function? Member function means functions declared inside a class. क्लास के अंदर जो भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं उसको मेंबर फंक्शन बोलते हैं. सो मेंबर फंक्शंस आर नथिंग बट functions declared inside class. There are two types of member functions. One is inside class definition and another is outside class definition. So member function can be defined inside class or outside class. So this is also very important topic. In examination you will get a 5 marks question like explain types of member function in a class. So there are two types of member function: inside class definition and outside class definition. Okay, so first inside class definition. So what is inside class definition means? Simple, a member function which is declared and defined inside class body is called as inside class definition member function. Means कोई भी फंक्शन किसको बोलते हैं? अभी मैंने बोला था एनी नेम विथ parenthesis. So this is a function and this is the body of the function. ये फंक्शन का बॉडी है. So if we define any function and if we write the body of the function inside class, अभी देख लो ये void get data बोलकर एक फंक्शन है, उसके नीचे उसका बॉडी है. सो ये फंक्शन और उसका बॉडी हमने कहाँ लिखा है? इनसाइड क्लास. ये क्लास का बॉडी के अंदर है. दिस इज क्लास रेक्टेंगल. क्लास रेक्टेंगल बोलकर एक क्लास है, उसके बाद
क्लास का बॉडी स्टार्ट होता है ओपन फ्लावर ब्रैकेट और यहाँ लास्ट में क्लोजिंग फ्लावर ब्रैकेट, यहाँ पे बॉडी क्लोज होता है उसका. सो इनसाइड दिस क्लास बॉडी वी हैव डिफाइंड फंक्शन बॉडी. सो दिस फंक्शन इज इनसाइड क्लास. This function is defined inside class body. So if any function which is defined inside a class body is called as inside class definition member function. So inside class definition function, it is very easy. मीन्स किसी भी फंक्शन को हमने क्लास के बॉडी के अंदर डिफाइन किया तो उसको इनसाइड क्लास डेफिनेशन बोलते हैं. सो उसका अपोजिट है आउटसाइड क्लास. आउटसाइड क्लास मीन्स इफ एनी फंक्शन which is defined outside class body, that is called as outside class definition member function. Okay, next, outside class definition member function. Okay, so this is also same. Actually outside class definition means ये भी same member function होता है, but दिस इज डिफाइंड आउटसाइड क्लास बॉडी. सो उसका सिंटैक्स कैसे होता है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस है. सो ए फंक्शन का रिटर्न टाइप क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड फंक्शन नेम, एंड दिस इज फंक्शन बॉडी. मीन्स क्लास के अंदर डिफाइन करना है तो फंक्शन इजीली डिफाइन कर सकते हो, बट आउटसाइड डिफाइन करना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क लगेगा. एक्स्ट्रा वर्क मीन्स इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड आउटसाइड क्लास बॉडी, अगर हमने फंक्शन को क्लास के बॉडी के बाहर डिफाइन करना है तो एक्स्ट्रा से क्लास नेम एंड दिस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, एंड रिमेनिंग थिंग विल बी सेम. ओके, so here I will show in this example. ओके, क्लास क्या है, मीन्स इनसाइड क्लास डेफिनेशन कैसे होता है. इनसाइड क्लास डेफिनेशन मीन्स मेंबर फंक्शन इनसाइड क्लास कैसे होता है, उसका सिस्टम सिंपल है. रिटर्न टाइप एंड क्लास नेम एंड ओपनिंग ब्रैकेट्स, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट. सो उसका एग्जांपल यहाँ पर है like this. This is return type, function name and opening closing bracket. Okay, if we define function outside class body, then उसका syntax थोड़ा सा change होता है. मीन्स यहाँ पर inside में कैसे था, return type and class name then body, बट outside में कैसे होता है, return type, class name, scope resolution operator, then function name, then function body. Okay, here I will show in this example. Okay, if a member is defined inside a class, means हमने एक member function को class body के अंदर define किया है. Example, this is okay, this is class rectangle. So rectangle is the name of class. This is data members and this is member function. Why function means parenthesis use किया है हमने. सो ये फंक्शन डेटा मेंबर फंक्शन है, सॉरी मेंबर फंक्शन है. सो दिस मेंबर फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड क्लास बॉडी. सो ये क्लास का बॉडी यहाँ स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड होता है. सो बिटवीन दिस क्लोजिंग ब्रैकेट एंड ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, हियर दिस इज द बॉडी ऑफ क्लास. सो इनसाइड क्लास बॉडी हमने फंक्शन का बॉडी डिफाइन किया है. सो फंक्शन नेम इज गेट डाटा और ये फंक्शन का बॉडी है. सो दिस is defined inside class. अभी इधर देख लो outside class. So in outside class definition same, this is class name rectangle, this is data members or member data, and this is member function void get data. So get data is a member function. Okay, and this is the body of get data function. सो ये हमने क्लास के इनसाइड डिफाइन किया है. बट ओके, लेफ्ट साइड वाला एग्जांपल में गेट डाटा एंड दिस इज पुट डाटा, टू फंक्शंस है. बोथ फंक्शंस, दोनों फंक्शन का बॉडी हमने क्लास बॉडी के अंदर रखा है. बट इन राइट साइड दिस गेट डाटा फंक्शन इज इनसाइड क्लास एंड दिस वाइड रेक्टेंगल पुट डाटा इज आउटसाइड क्लास. सो क्लास का बॉडी ऑलरेडी यहाँ पर एंड हो गया है. So after
द क्लास बॉडी मीन्स क्लास एंड होने के बाद हमने फंक्शन को डिफाइन किया है. So this put data function is defined outside class body. So outside means लेफ्ट साइड देख लो, वाइड पुट डाटा, जस्ट हमने इतना ही लिखा है, बट यहाँ पर राइट साइड में वाइड रेक्टेंगल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड पुट डाटा, इतना एक्स्ट्रा से लिखना पड़ रहा है. वाई? बिकॉज अगर हमने फंक्शन को क्लास बॉडी के अंदर ही डिफाइन किया तो रेक्टेंगल और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज नहीं होगा. If we define a function outside class body, then class name and scope resolution operator is used. So this is a function defined outside class body. So wide rectangle put data. So this is the method. So here main difference क्या है, function को class के अंदर define करना है तो easily define हो जाएगा, but outside class body define करना है तो extra से class नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, इतना सा एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा, क्लास नेम एंड दिस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफाइनिंग ए क्लास इनसाइड बॉडी एंड आउटसाइड बॉडी. So if we are defining a class inside body, if we are defining a function, member function inside a class body, then we have to write the return type, function name and body of the function. But if we define a function outside class body, then we have to use return type, class name, scope resolution operator, then name of function, then function body, like this. So this is the difference between inside class and outside class declaration. So it is very simple, just difference is class name and scope resolution operator extra से use होता है. Okay, there are some characteristics. The type and number of argument in member function must be same types and number of data declared in class definition. Okay, so it means okay, यहाँ पर ये इसका declaration मिस हो गया है. Okay, here important point, this double colon is called as scope resolution operator. So where it is used, scope resolution operator is used when we are defining a function outside class body. Okay, so here also another example, this is a class operation. Operation means it is the name of class. ये class का body start होता है open flower bracket, then private data members and public members. Okay, private and public. Okay, here a b are variables and here sum and product are functions. Why function? Because here parenthesis is used. Okay, integer sum, integer product, these are function. Okay, हमने class का body, यहाँ पर class का body end होता है. So inside class body we have declared the name of function. So class के अंदर हमने sum and product बोलकर functions declare किया है, define नहीं किया है. Define means उसका body भी अगर हमने लिखा है तो उसको defining बोलते हैं. But here we have used only name of functions. So this is called declaration. इसका हमने function का body अभी define नहीं किया है. So here function body is defined outside class. Okay, so function body is defined outside class. So class के अंदर sum and product only function name is declared, they are defined outside class. So outside class define करने से क्या होता है, so integer as it is use होता है, but before function name we have to use class name and scope resolution operator, then function, and this is the body of the function for some function. Then another function is product. So here product function is there. Okay, okay, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है. एक्चुअली इंटीजर ऑपरेशन यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज होता है. सो ऐसे प्रोडक्ट बोल के यूज करना है, यहाँ पे ये रॉन्ग दे दिया है. सो दिस इज द एग्जांपल फॉर डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस.
Okay, then last topic, defining objects of a class. Okay, अभी हमने देखा है how to define classes. So now we have to see how to define objects. So compulsory first we have to create a class, define a class, then we can create object. Means object create करने के लिए first class create करना पड़ता है. So once the class is defined, object is created from that class. Means directly हम object create नहीं कर सकते. First we have to create class, then we can create object. So syntax is very simple. How to create a object? Object create करने का syntax very simple है. So here class create करने का syntax है. First part already you know. So this is the syntax for creating class. Class, user defined name, private, public, closing flower bracket, semicolon, like this. Then this is the syntax for creating objects. So objects कैसे create करते हो? So to create object we have to use class name. Okay, class name is user defined name. So user defined name बोलकर यहाँ use करके we can create objects. like एक ही लाइन में multiple objects create कर सकते हो, like object 1, object 2, object 3, like this. Okay, so I will show here. Okay, for example, okay, this is a class student. Okay, class student. Then this is class body. So public, I am writing anything like a comma b, like this, and integer sum. This is a function. Okay, so this is a very small class. Okay, I have created class student. मैंने student बोलकर एक class create किया है. So class का body में बहुत ही small है, just integer a b, 2 data members are there, and sum, 1 member function. So this is a class. So इतना मैंने जो create किया है, this is a class. Okay, after creating class, okay, last को semicolon होता है. Okay, after creating class, now I can create object. How to create object? So object create करने के लिए syntax class name लिखना पड़ता है, then object name, like this. So to create a object we have to use class name, then we have to use the object names. So अभी मैंने student बोलकर ये class create किया है. So उसका object कैसे create करते हैं? First we have to use class name. So class name is student. So student means first I have to write student. So student is a class name. Then s1, s2, s3 कितना भी create कर सकते हो, semicolon. So this s1, s2 and s3, these are the objects. इसको object कैसे बोल सकते हो? Okay, कैसे आइडेंटिफाई करोगे दिस इज ऑब्जेक्ट? ये ऑब्जेक्ट है बोलकर कैसे आइडेंटिफाई करना है? सो ऑब्जेक्ट कैसे बोल सकते हो? मीन्स ऑब्जेक्ट s1, s2, s3, ये ऑब्जेक्ट कैसे बन गया? बिकॉज दीज आर क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लास. ओके, इसका एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, सो हियर अभी मैं तुमको बोला वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लो, दिस इज integer a comma b. So these are variables, integer a comma b. So these are called as variables. These are variables. But this s1, s2, s3, these are called as objects. So these are called as objects. Okay, अभी कैसे आइडेंटिफाई करना है? वेरिएबल कैसे होता है, ऑब्जेक्ट्स कैसे होता है? सो देयर इज अ डिफरेंस. इफ फॉर
creating data members or data items if we use basic data types. Okay, in programming there are 4 or 5 basic data types like integer, comma, float, comma, डबल. ऑलरेडी ये तुमने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया है. सो इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, लाइक दिस. दीज आर बेसिक डाटा टाइप्स. सो ऐसे वर्ड्स के साथ में अगर ये बेसिक डेटा टाइप यूज होता है तो वो वर्ड वेरिएबल बनेगा, लाइक दिस. सो मैंने इधर इंटीजर यूज किया है. इंटीजर इज ए बेसिक डेटा टाइप. सो इफ basic data types are used with some words, then those words are called as variables. if okay, यहाँ पर मैंने बेसिक डाटा टाइप यूज नहीं किया है. सो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है, दिस इज ए क्लास. स्टूडेंट इज ए क्लास, यहाँ पे अभी हमने डिफाइन किया था. सो स्टूडेंट इज ए क्लास. सो इफ एनी वर्ड which are created using class name, then those words are called as objects. So actually objects means same variable जैसा ही होता है. Variables are created from basic data types and objects are created from classes. So S1, S2, S3 are objects because they are created from student class, and A and B are variables. So these are not objects, these are simple variables because they are created from basic data types like integer, or you can use float, double, character. So this is the difference between variable and object. And here main topic is how to create object. So to create a object we have to use class name. So this is the general syntax: class name, object name. Example, class name is student. So you can create S1, S2, S3, any number of objects you can create from